Hi guys, 11 this side. Welcome to this new tutorial video. In this video we will create this pen drawing animation inside After Effects. Basically first हम एक पाथ क्रिएट करेंगे और उसे एनिमेट करने के लिए हमें ट्रेस पाथ ऑप्शन का यूज़ करना होगा जिससे पेन उस पाथ को ट्रेस कर सकेगा. So let's start the video. If you are new here, please subscribe the channel. Now सबसे पहले हम पेन टूल से शेप क्रिएट करेंगे. So select the pen tool and start drawing shapes. Now press Alt and click on the edges of the shapes. It will smooth the corners. Now select the shape layer and search cap so you can find the line cap option. Now change it to the round cap and also change the line join to round join. Now I will add the pen composition which I already created. इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा. यहाँ पे मैंने फीदर और उससे टेक्स्ट रिवील कैसे कर सकते हैं ये एक्सप्लेन किया है. नाउ अलाइन द शेप टू द सेंटर एंड प्रेस U ट्वाइस टू ओपन अप द ऑल द प्रॉपर्टीज़. नाउ ऐड पे क्लिक करके ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करेंगे. एंड को 0 करके स्टार्ट पे की फ्रेम क्रिएट करेंगे और कुछ सेकेंड्स बाद 100 करेंगे. Now you can see what we did. Now select the layer and go to Windows and click on Create Nulls from Path. अभी यहाँ पे शेप लेयर पे U प्रेस करके जो पाथ 1 है इसे सिलेक्ट करके ट्रेस पाथ पे क्लिक करेंगे. सो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसके की फ्रेम को ड्रैग करके ट्रिम पाथ के की फ्रेम तक ले जाएंगे. नाउ पेन वाले कॉम की पोजीशन को शेप लेयर की स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे. Now parent the comb to the trace path layer and adjust the position. Now we will create an ink effect on the shape layer. So make a second comb and name it ink. Create a solid and add a effect called fractal noise. And leave it as it is. Now create an adjustment layer and add the ink comb to the timeline, and you can hide it or you can place it under the solid so that the fractal effect is not visible. Now add displacement map on adjustment layer and select the ink comp in displacement map and copy my values. Duplicate the layer to enhance the effect. Now you can see it's affecting the pen as well. So to prevent this, add pen comp layer on top of the adjustment layer. So this is how you can create pen drawing animation inside After Effects. Okay, so that's it for today's video. I hope you like this video, so please subscribe to this channel for more editing tutorials. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.